एंड वेलकम टू वी विमेन वांट। आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम है फॉर विमेन बाय विमेन और इस प्रोग्राम में वी रेज इश्यूज दैट कंसर्न विमेन। दे कैन बी एवरीडे इश्यूज, दे कैन बी योर लीगल इश्यूज, इश्यूज रिलेटेड टू डाइट, हेल्थ, एनीथिंग। जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वी टॉक देम ओवर हियर। सो दिस इज नॉट जस्ट अ शो, दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट ग्रुप। तो आपका स्वागत है। एंड आज हमारे साथ हैं, वी हैव टू फेमस लीगल ब्रेन्स विद अस, सो वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग लीगल इश्यूज टुडे। वी हैव पिंकी आनंद, जो फॉर्मर एडिशनल सोलिसिटर जनरल हैं। शी इज ऑल्सो फॉर्मर बीजेपी spokesperson. She's an expert on constitutional, family, property, environment and international law. In fact, जब ये शुरू में आई थी, she had quite a victory against a very famous established male, I think lawyer LM सिंघवी के खिलाफ उनका पहला win था. Shows that women are doing well over here. She represented खुशबू in the right to freedom of expression case and उन्होंने किताब भी लिखी है Trial of Truth, which on India's landmark criminal cases. And joining us is also Malvika Rajkotia. She is an attorney who specializes in family and property law and इन्होंने issues of civil liberty, environment भी किया है. She has written a book which her name is very apt. In fact, both the books' names are very apt. Malvika's किताब है Intimacy Undone, क्योंकि the book talks about marriage, divorce and family law in India. So, in fact, interesting, दिलचस्प बात है, both of them have beaten us to it. They've both also anchored shows on legal issues. Malvika anchored Shakti and Pinky anchored Legal Balance. So, they have beaten me to this. So, I think I'm lucky to have both of you here as co-anchors. But the focus of the show today is this landmark judgment in the US, Pinky. You must have heard about it, the Roe versus Wade को, जो abortion को overturn कर दिया है. तो उसके बारे में I wanted to know आपकी राय and compare it to जो हमारे पास इंडिया में है situation. Priya, the point is that it was actually shocking, and I was in fact at that point abroad in a conference which was dealing with some of the very material issues and international issues at that. So when I heard that, I was taken aback. I said, where are we going with this conversation? Because ultimately we are becoming more and more libertarian. We are becoming more and more conscious of the rights that accrue to human beings, to women in particular. Everything is being treated progressively. And honestly speaking, Priya, if I come to India, I think India has been doing a remarkable progression in safeguarding rights of women legally. How much it translates into actual practice, of course, varies because of different cultural ethos and the interactions that we have. But coming back to the subject of abortion, I mean, I also remember that one case that, this woman who had gone to Ireland, and again where it was prohibited, and Sylvia, I think the name was, and ultimately you had such a problem with that situation, because imagine you to go from one place to another simply to get an abortion done when you want to have it done. So the question is your autonomy, your right to have something done when you want it done. Now India, for example, just coming to India, and then we'll go to the Dobbs judgment, the American one, which overturns Roe versus Wade after almost 50 years of it remaining there. But in India, for example, we had the Medical Termination of Pregnancy Act, which permitted abortion. Of course, the duration varied, and you had amendment ultimately which permitted it from 20 to 24 weeks, depending on just two circumstances and one medical practitioner. So when you had a grave risk to the fetus or to yourself or the mother's health, and also now it is translated that where there is a question of rape, then it is presumed that it is grave injury. मतलब ज़्यादा injury आपको हो ही गई है, so therefore it's assumed that it's a factor which allows you. So basically, and only woman's consent. So 3-4 material factors which are there. What does Dobbs do? The American judgment which overturns Roe versus Wade, in a time where we are all progressing towards a higher evaluation of rights and evolving rights. It says, well, the Constitution ने permit नहीं किया था अमेरिका में. I mean, whether the Constitution permitted it, didn't permit it, are we going back to some 50 years hence and pre-Roe versus Wade also to say, all right, now let us find the actual amendment. That's what America did ultimately in the judgment. And the Justice Alito, who looked at the judgment, says that there was no constitutional right. See, what is a constitutional right? A constitutional right is something जो आपको not only एक dead letter of law देती है, or the book itself, but actually the evaluation by courts, by times, by cultural ethos. Look at the way rights have gone all over the world, and let us say LSBT rights. You just LGBT rights. So you actually have these rights which are evolving, which were they there in the Constitution to say you do this? No, it's an interpretation ultimately, and you do adapt to its situation. Secondly, you ultimately have a negative which has been remaining. शुरू से रहा है, औरतों को कोई हक नहीं है. I mean, Plato and all ultimately go up to a point of saying you don't even have a right to become a citizen of a state.
एक स्टेट के सिटीजन नहीं हो सकते. इमेजिन द लेवल टू विच इट हैड गॉन. प्रॉपर्टी नहीं रख सकते. इंडिया में भी था. आपका कोई हक नहीं था, आपको राइट नहीं मिलता था, आपको बोलने का राइट नहीं था, लीव असाइड फॉर हैविंग एनी राइट्स इन प्रॉपर्टी. बट समय समय से सब एवरीथिंग इवॉल्व. सो लुक एट द प्रोग्रेशन वी हैव डन हियर एंड लुक एट द रिग्रेशन that you've had in America with the judgment which says, I'm sorry, it is not a constitutional right and therefore since we can't find any basis, privacy का क्या है? Privacy भी छोड़िए, autonomy का क्या है? आपका हक जो है as your own individuality, and today everybody is fighting for this individuality. All the young people here who are here also looking at these kind of concepts who say, I have a right, why can't I exercise it? Do I need to be dependent upon society to decide? So उन्होंने बीच में fetus का क्या right है? All this is taken into account. India, for example, takes into account all these issues of medical termination of pregnancy. It's not done in every circumstance. You do require a medical practitioner, but at the end of it, when it is not a viable fetus, which is the age of quickening and otherwise that you come across, you can do so if you so desire to do so. Why should you have an unwanted situation forced on you? मालविका, आपको भी और जो माय टेक अवे आल्सो फ्रॉम हर इज दैट लॉज को जेंडर सेंसिटिव भी होना. ये नहीं कि रूल ऑफ लॉ ये है तो यही है कॉन्स्टिट्यूशनल. देयर आर अदर थिंग्स दैट नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट. फर्स्टली इंडिया का क्या लॉ है अगर आप हमें बताएंगे, एंड देन योर रिएक्शन टू अमेरिकाज. इंडिया का क्या लॉ On abortion. with regard to abortion? With regard to No, that, as Pinky says, you see, yes, we do have women do have a right within a certain period of time, subject to certain constraints, medical, issues and so on. But the fact is, it's not a untrammeled right? So it's not pure autonomy in the manner that perhaps the feminist argument would like to develop, because it is still a regulation of the right of the fetus. But in India, it is still you become quick with child, which earlier on used to be presumed to be, I think, 8 weeks or so, and now it has been 16. increased for a number of reasons up to 24 weeks. Okay. But the point is, it's not untrammeled. अनट्रैमल्ड माने? मतलब कोई it has constraints. Okay. And that takes us to the deeper issue, which is of autonomy, and the fact that a woman's body then becomes the subject of a state interference and regulation, right? Whether it is up to 4 weeks, 8 weeks is not the point. After that, it is a woman's child who will decide, right? But then it is not hers alone, the husband, consent required, etc. after a particular point of time. So by gender itself, yes, a woman's body constrains autonomy. Now, within that, what is the extent of autonomy that she is entitled to? And the feminist argument consistently is that it's not enough. The most recent example in Delhi, for example, is the Delhi High Court. It's not a judgment yet because it's a split verdict. So there are two opinions. Justice Shakdhar saying complete autonomy, privacy of the body, which means that marital rape, otherwise it's an exception. Rape within a marriage is not to be treated as rape, is called the marital rape exception, which Justice Shakdhar struck down as being unconstitutional and in violation of even the judgments laid down by our Supreme Court in Puttaswamy, which was in 2018, and many before that also on the right of privacy. In contrast, Justice Hari Shankar says that marriage is a sacrament, and in that it is a legitimate sexual, it is legitimized sexual interaction, and sex is a legitimate right within the marriage. And in that circumstance, for a husband to demand, overpower his wife and override her wishes, lack of consent, right, does not constitute rape. Wow. Right? Now, but that is the statute as it is at the moment, which is a 19th century statute. To my mind, the two positions represent the dialogue of the times and the traction and the pull and the polarity. One is the conservative, which is oppressively patriarchal, be it on the issue of the marital rape exception being upheld, or now be it in the case of Roe versus Wade being overturned.
the conservative patriarchal seems to be surging ahead. And therefore, in that context, the struggle for women is now going to be, again, more difficult than it was even 20 years ago, where the progressive elements of across the world were such that there was an intrinsic recognition of a woman's autonomy, of her right to work, and yet there were issues that were being ironed out along the trajectory of progressive. That now we've reached a time of pushback. Okay, just for the audience, I just want to inform, the Roe versus Wade judgment हुई थी अमेरिका में, जहाँ पे उन्होंने abortion को with certain conditions allow किया था. काफ़ी landmark judgment थी, everybody appreciated it. वो overturn हो गई है Dobbs judgment की, जैसे जिक्र कर रहे हैं उससे, और अमेरिका में हो गई है, लेकिन इंडिया में अभी भी we are little more progressive, so that is at least one good sign. We are very much more progressive. Very much more progressive, says Pinky. You had fought that Khushbu Sundar case, which was actually उन्होंने कोई comment किया था, which showed that she is in favor of premarital sex, कि शादी के पहले सेक्स और लिव इन रिलेशनशिप्स, पर केस उससे ज़्यादा बड़ा था, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का था. नहीं, बिल्कुल बड़ा था केस. सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने किस चीज़ के ऊपर बहस की, पर उन्होंने बहस की, उन्होंने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए. और आप अगर देखेंगे तो मद्रास हाई कोर्ट ने जब उनके खिलाफ होल्ड किया कि उनके खिलाफ 21 क्रिमिनल केसेस चल सकते हैं, तो इस ग्राउंड पे होल्ड किया कि ये सेक्सोलॉजिस्ट नहीं है, खुशबू अपना एक्सप्रेशन दे कैसे सकती थी, खुशबू प्री मैरिटल सेक्स के बारे में बात कैसे कर सकती थी. उन्होंने इतना एडवोकेट नहीं किया था, उन्होंने ज़्यादा ये कहा था कि अल्टीमेटली होता क्या है देश में, और ख़ास करके जिस स्टेट की वो बात कर रही थी उस बारे में बात करती कि महिलाओं किस प्रकार से आगे बढ़ रही हैं या आगे क्या करती हैं, इसको रियलिटी चेक करके. प्लस उनका ये व्यू था और ओपिनियन था. तो एक तरफ था लिव इन रिलेशनशिप, जो उस समय हमारे देश में इतना रिकग्नाइज नहीं था, जो आज की तारीख में काफ़ी हद तक कानून ने, और वो भी प्रोग्रेसिव. जो हम बात करते ओरिजिनलिस्ट, जो मालविका जी अभी बोल रही थी, अवे फ्रॉम द ओरिजिनलिस्ट थॉट टू कम टू द करंट थॉट, कि भैया आज के ज़माने में लोग ऐसे करते हैं, कर सकते हैं, करना चाहिए. खैर दीज आर ऑल मॉरल एंड एथिकल इश्यूज. बट जहाँ तक कानून का सवाल है, कानून ने प्रोटेक्शन अब लिव इन रिलेशनशिप्स को दे दी, हर एक्ट में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में दे दी है. आपको वही हक है जो आप एक मैरिड वुमन को है, इसे लिव इन में भी है. मेंटेनेंस का राइट है, वो भी महिला को मिलता है अगर लिव इन रिलेशनशिप में है, बिकॉज अल्टीमेटली प्रिज्यूम किया जाता है कि दिस इज अ मैटर ऑफ ऑटोनॉमी. तो वहीं आ जाती है ऑटोनॉमी की. बट कमिंग बैक टू खुशबू, द क्वेश्चन वॉज, क्या एक महिला या क्या एक व्यक्ति को ये हक है कि वो अपने व्यूज़ आगे बोल सकता है? आपको अच्छे लगे, बुरे लगे, वो आपकी मर्जी. और ये हमारे देश में, एक डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में बहुत ज़रूरी है. I can voice myself what I want. It's up to you how you take it. But we need to actually come to terms with this. And you need to come to terms with such forthright women such as Khushbu, who've really made their mark in the annals of history. She was revered as a goddess. जब मैटर कोर्ट में चल रहा था तो एक बारी जज साहब ने यही कहा सुप्रीम कोर्ट में कि आप इस तरीके से अपनी गॉडेसेस को पूछते हो, उनको उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस आप डाल देती हो. और क्या क्रिमिनल केसेस, और एक नहीं 21 क्रिमिनल केसेस सारे स्टेट में, कि आपने ये कहा क्यों, और ये आपके कहने का कोई राइट नहीं है, और ये आप गंदी बात कर रहे हैं. मैं सो टू से ऑल राइट नाउ, सो इन ईच ऑफ दीज काउंट्स द सुप्रीम कोर्ट रियली अपहेल्ड दिस राइट टू से इट इज़ अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. प्रिंसिपल एरिया ये था. लेकिन दूसरी बात जो उभर के भी आई थी कि अगर आप कोई रिलेशनशिप को किसी तरीके से एडवोकेट कर रहे हैं, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप है, जो उस समय इतनी मतलब ओपन नहीं थी, थी तो सही 2009 के बारे में. हाँ, 2009 के बारे में. सो इवन देन इट वॉज हेल्ड अल्टीमेटली इट इज़ समथिंग विच वी हैव टू कंसिडर. एंड आज की तारीख में अगर आप देखें तो हम इतना आगे प्रोग्रेस कर गए हैं हर चीज़ में. कानून की दृष्टि से अगर हम देखते हुए, सब्सटैंटिव लॉ में देखते हुए, हर तरीके के जो राइट्स हैं हमने इवॉल्व किए. जहाँ थे वेरी गुड, जहाँ नहीं थे कानून को अमेंड कर दिया. जहाँ कानून ने अमेंड नहीं किया वहाँ पे जजेस ने जो अगेन जो स्टेटमेंट हो रहा था कि जजेस का व्यू पॉइंट है. जजेस का व्यू पॉइंट कहाँ से आता है? वो एक डेड लेटर से, जो मैंने शुरू में कहा था, संविधान भारत में हम मान के चलते हैं एक लिविंग ब्रीदिंग ऑर्गन है जो आपको रिप्रेजेंट करता है, जो समाज के साथ साथ दायित्व बदलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बदलती हैं, थॉट बदलता है, और किस प्रकार से समाज बदलता है. और दूसरी चीज़ जो पेट्रियार्की की बात मालविका कर रही थी, बिल्कुल सही है. ये जो सारे पहले प्री थॉट कॉन्स्टिट्यूशनल कह लीजिए जो कानून थे, वो सब पेट्रियार्कल थे, बेसिकली टू डिप्राइव women of having equal rights, and today it is one of having equal rights.
एक बात में से जो मालविका ने कहा मैं उस पर जिक्र करना चाहूँगी। अबॉर्शन के बारे में जो थॉट मालविका जी कही थी फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट से है, मेरा ये मानना है कि कंप्लीट ऑटोनॉमी बैलेंसिंग ऑफ राइट्स को भी कंसिडर करना है। यहाँ पर जब आप अबॉर्शन की बात करते हैं तो एक महिला है और एक जीव है, फीटस। नाउ वेदर दैट फीटस इज अलाइव एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम, उसकी क्या हैसियत है, वो इंसान है, Rights है। इसलिए राइट्स है, इसलिए अबॉर्शन में थोड़ा सा फर्क आ जाता है और उसमें देयरफॉर जो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट में भी विच एवर वे इट इज, बट पर्सनली आई वुड से दैट वी नीड टू कंसिडर कि एक जो जीती स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ एक महिला के टुवर्ड्स नहीं है, महिला के अंदर जो जीव जंतु है उसके लिए भी है। सो देयरफॉर दिस बैलेंसिंग ऑफ राइट जो किया जाता है अप टू अ पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ परमिटेड होता है, पॉसिबली इसके लिए हमारे पास और कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं होगा। Hello and welcome back to We Women Want. We are in conversation with two legal minds talking about women rights and of course, what to expect. उसके बाद हमारे पास कॉलेज स्टूडेंट्स भी हैं जो अपने सवाल करेंगे। मालविका जी, टेकिंग फ्रॉम हर थिंग कि जो ये आपका पॉइंट था, जो ओरिजिनलिटी, द लॉज ऑफ फ्रेम्ड एट दैट टाइम, जहाँ विमेन का इतना हक दिया नहीं जाता है, जो अब समय बदल गया है। इन फैमिली, इन डिवोर्स दिस थिंग, और इन अ मैरिज, व्हाट आर women's rights in a marital situation? Marital rape of course is one. Yeah, which is that she's completely Consent दे सकती yeah, है, देना I mean, she चाहिए। has no autonomy in the sexual relations, which is problematic. अभी अच्छा, she's not no autonomy. No autonomy, obviously, because she can be raped by her husband and it's not an offense. It's not a criminal offense. I mean, she has other remedies. She can file for divorce. She can file under the Protection of Women from Domestic Violence Act. She has those. But the question then arises whether it is a deterrent enough or whether that is a remedy which addresses the offense. Now, my view is that this remedy does not address the gravity of the offense of rape. It's as painful whether it is outside marriage or whether it is within marriage. So that's physically the issue. And then, of course, philosophically, there's no reason why she should be expected to suffer less because she's married. ये divorces में ये मुद्दा आता है क्या? People raise it? Now comes the question of divorce. And broadly, मुद्दा तो cruelty में आता है, ये वो, that's one thing. And coercive control, which is non-physical, and coercive control exercised through money, these are all issues. But the problem is that in a divorce, there are two issues of children and of finances. In both, I do believe that fathers' rights step in to say children have a right to meet both parents, and I can't argue with that. Of course, that's true. So that is spent easily now. The courts are doing more co-parenting, which is that is a product of the marriage, which both parties have a right to. Right. But why is that principle not applied when it comes to finance? That too is a product of the marriage. Very good point. Right? Now, for example, a non-working wife, if she's sitting at home, she's rearing the children, she's running the kitchen, she's running the house. All of these things make it possible for the man to go out and earn. So the value of her work, which is non-paid, needs to be given a financial value at the time of divorce to recognize an equitable distribution of funds when it comes to divorce. पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। And the levels of the maintenance orders, now they are improving. Lifestyle rule requires, so they are becoming more generous, one has to say. But why should a word like generous be used? So I myself am rethinking the word. Because it's with an element of patronizing. It is patronizing. It is a dole. So we have to approach that differently. So, coming out of the mindset needs to change, which I want to ask you, how is the women gender representation, gender sensitive from the lawmakers also? No, see, the point is you keep making efforts, and to this extent, you're finding that the stakeholders who are at the top, so to say, the power holders,
ultimately at that level it has. And believe me, the amount of radical changes that we've had in Indian law, for example, by legislation, by amendment, हमने हर चीज में परिवर्तन किया है. प्रॉपर्टी राइट्स में किया है, डिवोर्स राइट्स में किया है, सक्सेशन राइट्स में किया है, प्रोटेक्शन में किया है, तलाक में किया है. तलाक में किया है. मतलब ट्रिपल तलाक, आप जब जजमेंट कोर्ट में जब बहस हो रही थी तो इसी बात पर थी कि अल्टीमेटली औरतों का जो हक है आप उनको एक्सपोज नहीं कर सकते. क्या आगे हुआ था कि ये बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, 1400 साल से चल रही है, इसको चलने देना चाहिए. तो हर जगह हुआ, सती हुआ. आई मीन यू हैड एक्सट्रीम चेंजेस इन लॉज डिस्पाइट at times opposition from the people, but you've done it successfully because ultimately you were able to sustain it. हमारे देश में, मैं यही बात हम लोग बाहर कर रहे थे कि अल्टीमेटली एट द टॉप हर जगह महिलाएं हैं, एट द टॉप पोजीशंस. आप प्राइम मिनिस्टर ले लीजिए, आप चीफ मिनिस्टर ले लीजिए, आप गवर्नर्स ले लीजिए, आप राष्ट्रपति ले लीजिए, आप स्पीकर ले लीजिए, ऐसी कोई पोजीशन नहीं. अब रिसेंटली फॉर एग्जांपल आप देखिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया है, लॉ के दायरे में बात करूंगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 4 महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जो आज तक नहीं हुआ है. एक महिला को जज को अपॉइंट किया जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी 2027 में. ठीक है, वो शायद एक शॉर्ट टाइम के लिए बनेगी और होनी चाहिए, वो तो अभी बात कर रहे थे 50% रिजर्वेशन की. बट अल्टीमेटली द पॉइंट इज, आज की तारीख में ये सब बच्चे जो काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सोचेंगे कि हम कल अगर आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन तो सकते हैं, उम्मीद तो हो सकती है. वही बात है, एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है और एक महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन सकती है. सो अल्टीमेटली यू नीड दैट इंस्पिरेशन. आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? अगर आपको लगेगा मैं यहाँ तक जाकर यहीं पर पहुंचूंगी, तो मैं पढ़ भी रही हूँ, तो करेंगे छोड़ो, पढ़ के इतना काफी है, इसके बाद दिस इज इनफ, आई हैव डन व्हाट आई नीडेड टू डू, सो आई स्टडीड, लेट मी गेट मैरिड नाउ, सेटल डाउन, रन द हाउस, etc. But if you feel yes, I can, with my work, with my dedication, with my motivation, achieve the top, then yes, I will work towards it. I'm going to now open the floor to questions. We have young students over here also who may have some questions. हेलो मैम. मैम बेसिकली ये कोई लॉ रिलेटेड नहीं है, बट एक नॉर्मल जनरल क्वेश्चन है कि हमेशा शादी के बाद जो ज़्यादा होते हैं ना, आजकल के जो बॉयज़ आ रहे हैं या फिर हस्बैंड्स हो रहे हैं, वो बेसिकली अलाउ करते हैं कि यू कैन वियर दिस, यू कैन गो देयर, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट. आई हैव अ क्वेश्चन, मतलब कि उनको ये राइट किसने दिया कि ही कैन गिव मी दैट सेंटेंस, मतलब कि प्रॉपर बोल सकते हैं कि नाउ यू कैन डू दिस, एंड कौन होता है? मैं तो नहीं बोलती यू कैन गो एंड मीट योर पेरेंट्स, यू कैन गो एंड डू वट एवर यू वांट टू डू, ये हम तो नहीं बोलते कभी भी आज तक. आई थिंक द क्वेश्चन डिजर्व्स अ क्लैप. ऑफ कोर्स वी एग्री विद यू. नो, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और बहुत गुस्सा आता है इस बात पे. ये जो प्रिजम्पशन आप सोच के चलते हैं कि ये राइट्स, ये सारी शुरुआत एक्चुअली इसी से है कि महिला एक प्रॉपर्टी है पुरुष की. एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम देयर एक्चुअली, एंड देयरफॉर दिस होल थिंग, बिकॉज ना पैसे का राइट आपको, ना कुछ करने का राइट, ना पढ़ने का राइट, ना काम करने का राइट. तो मतलब कपड़े पहनने, तो मतलब व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स टू वेयर इज वेरी सेकेंडरी, आई वुड से, बट इट्स वेरी मच देयर एंड वेरी राइट कि आप किस हद तक, यही कोर्सिव कंट्रोल की भी जो बात कर रहे थे, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ कोर्सिव कंट्रोल, और ये सब पेट्रियार्कल सिस्टम से है. अच्छा, अजीब बात है, मैं कई बार इसको पॉलिटिकल दायरे में भी देखती हूँ. और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो एक अभी मालविका बात करती है उसी के कॉन्टेक्स्ट में, कि अल्टीमेटली यू नीड विमेन इन पोजिशंस ऑफ रिफ्लेक्टिव चेंज इन पॉलिसी. आप उस लेवल पर आए जहाँ पे आप समय को बदल सकते हैं और सिचुएशन को बदल सकते हैं, ताकि अभी जैसे विमेन इन पार्लियामेंट की बात है, we've had at the lesser levels, we've had at the municipalities, पंचायत 73rd अमेंडमेंट आ गई थी, लेकिन अभी तक लोकसभा और राज्यसभा के लिए फिगर्स अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, करीब 14% है आज की डेट पर, मच बेटर देन अर्लियर. बट वी नीड पीपल इन पोजिशन ऑफ चेंजेस, ऑफ पॉलिसी चेंजेस. सो कमिंग बैक, वैसे मैं कहीं और पहुंच गई आपके क्वेश्चन के साथ साथ, अल्टीमेटली वी नीड डेफिनेटली टू असर्ट दिस, आई हैव अ राइट टू डू what I can do or I want to do, unless I am harming anybody else. वही प्राइवेट और पब्लिक गुड की बहुत पुरानी प्लेटो एरिस्टोटल की डिबेट्स हैं कि as long as I am not hurting anybody, harming, not hurting, harming anybody, I should be able to do what my capacities are. And secondly, I think जो एक सवाल और है, मेरे को अपनी कैपेसिटी के लिए वो सब औजार मिलने चाहिए. I should get every possible tool in the world which I can have to develop my capabilities and potentials, not only as a woman, as a citizen of the state. Good one. थैंक यू मैम. लेकिन एक और बात इसके इनके जवाब में मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जब आपने जैसे बोला कि हार्म नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मॉरली वुमन बिकम्स द रिपोजिटरी ऑफ मोरालिटी, पब्लिक मोरालिटी. आपके कपड़े पहनने का ऑब्जेक्शन मॉरल ऑब्जेक्शन है,
आपका ये डॉब्स वाली जजमेंट की हम बात कर रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया. इट्स अ मॉरल क्वेश्चन. तो जो विमेन की बॉडी है, जो उसका रहने का तरीका है, मॉरल बर्डन उसी पे है. हालांकि जो आदमी के तरीके हैं वो मॉरलिटी में इट बिकम समथिंग दैट मेन डू. You know, that's the problem. Boys will be boys. Let's take something like drinking and smoking. There was a WhatsApp round to say when women drink and smoke, it becomes bad for, it's immoral. But when a man drinks and smokes, it's only bad for his liver or his, lungs. So as if, she becomes the repository of morality. That's the issue. That's a nice one, yes. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आजकल जो लॉज बन रहे हैं वो काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, लेकिन लोगों की सोच नहीं खुल रही है. जैसे कि लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. अगर कोई महिला, कोई लड़की अगर प्रेग्नेंट हो जाती है और लड़का उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उस टाइम में लड़की को ऐसा देखा जाता है कि ये लड़की अच्छी नहीं है, उसकी शादी नहीं होती. डाइवोर्स में 1% चांस ये रहता है कि हाँ, ये उसके बच्चे तो सेकेंड शादी मतलब हो जाती है. लेकिन लिव इन में ऐसा नहीं होता है, उसको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. तो ऐसा क्यों? क्योंकि लॉज तो चेंज हो रहे हैं लेकिन लोग चेंज नहीं हो रहे. उनकी थिंकिंग कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव है. तो इसकी क्या वजह है मैम? तो मेरे मुताबिक कानून औरत की पहचान तो कर रहा है, लेकिन और औरतों की सोच बदल रही है, लेकिन आदमियों की सोच नहीं बदल रही है. तो लेसन रियली है कि कानून इज़ नॉट जस्ट ब्लैक एंड वाइट जो कागज़ में लिखा है. कानून लोग बनाते हैं और लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं. तो लोगों में सेंसिटिविटी होनी चाहिए. हमारे लीगल सिस्टम में हमारे जो MPs हैं पार्लियामेंट में नीड टू बी मोर जेंडर सेंसिटिव, विच इज़ वाई वी आर डूइंग शोज़ लाइक दिस, ताकि उनको थोड़ी हमारी आवाज़ पहुँची जाए. बट थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन. थैंक यू ऑल एंड थैंक यू फॉर द ऑडियंस ऑल्सो. थैंक यू. थैंक यू. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.